Good morning, Quadrin, good morning, Namaskar. This is Inja Singh speaking from Bharat, India on this day, 20th November 2023, Monday, and this is now around 2:10, 14:10, you can say 2:10, 2 o'clock, and 2:10 afternoon. So, good evening, sorry, it's not good morning, no problem. Let us say good day, it's okay. आज का दिन आप सबको शुभ and topic is quality related to everything in life, and I'm talking about again a series in continuation to Israel Palestine war between Israel and people of Palestine. Very important issue. Whole world has been very serious in this case. In our country, there is no much you can saying about this. I did not find major news on this. Unfortunately, I don't know what's happening in this country, Bharat, India. It should not happen like this, but it's happening, and we have to see update as far as I can say what I noticed today through news or through videos, and that is on 20th November. I'll just tell you share with you first because that's also very important. First, let us discuss that one. First, that one let me read through my notes, and that is here Israel Palestine World 2002. I'll give this in another video through Zoom, and so that a screen share can be seen. But here I'm just reading for you, and that is on 20th November 2023, Israel Palestine World, and this is in relation to each other. Israel Palestine and whole world is 2023. War between Israel and people of Palestine has been accelerating rapidly without having any consideration for reliable ceasefire. We know that is not happening. I'll come back to you again. I'm reading my comments that I noted for today. Whole world is silent with exception of few only. Humanity has been being thrashed. Humanity has been being thrashed by so-called civilized world. All are conducting as spectators. I am also a spectator. I'm not able to do anything, and you too. I think news, whatever news we get through whatever sources, maybe videos or newspaper like Cards or Times of Iran or Al Jazeera, or you can say Palestine Chronicle. Where I usually depend on this news on 4 or 5 newspaper, and one is you can say PalestineChronicle.com, other one is AlJazeera.com, then ArabNews.com, and then Israel Times of Israel.com, and I can Hertz.com, and maybe some else if I get I take. But these are sources from which I can say sometimes I get from Kuwait Times also. So news has poured in, but I can say news has poured in that Qatar and KSA stands to Kingdom Saudi Arab, may do something jointly to have certain ceasefire soon, but no details are available till now. News has also poured in or come that in that China shall organize certain meetings with Islamic and Arabic nations in coming time in connection with how to handle existing hot pursuit state of war that is ongoing between Israel and people of Palestine. According to China, some solution must come first to have ceasefire and then to have Israel and Palestine two-state solution, which is root point for one part and not root point for other part, because one part wants two-state solution. That is one state is Israel and other state should be Palestine. But other part of Israel says no, it's whole Israel. Well, I will come back to you. So what happens? I don't know. USA has proved that it is worst society and nation to care of human rights of downtrodden. Very important point I'm saying. USA, that is United States of America, has proved that's the worst society and nation to care of human rights of downtrodden. Had it not been true, USA would have forced Israel not to continue such war again against people of Palestine, but it did not do that. It seems that USA has certain vested interests to achieve from success of this war if Israel occupies Palestine area of Gaza. It is proved that USA does not hold any human standards for others. USA has for sure earned a very deep black mark on its face. This black mark shall be remembered in future.
and history would taint USA. UK has also proved that it's not a civilized society, civilized nation. UK has proved that it does not care for humanity, for others, but for itself only. UK has not done anything to do, you know, to do something positive or whatever you say, anything positive to achieve peace in this region. It seems that UK has lost its glory of calling itself a civilized society. Germany has also stood in same raw, no agreement could reach between Turkey and Germany because German is more concerned with self-defense joke delivered by Israel. It's also through learned through unconfirmed that though is learned also learned that though unconfirmed that Germany may start changing its stance consequent upon its meeting with Turkey president. New definition of self-defense has been invented by USA, UK, Germany, and Israel. This definition shall work too adversely in times to come and also in consequential result of this ongoing war between Israel and Palestine people. Israel is a criminal nation supported by USA, UK, Germany, etc. It is certainly proved now when this war has reached more than 45 days approximately. USA has said that post eliminating Hamas, international team shall be engaged to administer Gaza, which would later be transferred to PLA, body of Palestine, that is, Palestine Liberation Organization. Israel said that no such allowance shall be made to international presence, which means that Israel is only interested in to capture this land owned by Palestine. It has been in news with, of course, certain contradiction that say 50 Palestine held hostages shall be released in lieu of 5 days ceasefire, but no one has formally confirmed this news. Heard that talks have been going on in this regard, but no confirmation has been made till now. Hospitals are still under attack and patients have been forced to be shifted. Israel has claimed that certain tunnel exists beneath hospital, but reliable sources encountered that it is fake. In fact, in hospitals, tunnels often exist for providing utilities services for medical and non-medical issues, use, say air conditioning, electrical, mechanical, etc. Many Jews in USA have changed their instance to support Israel due to fact that Palestine civilians are under attack and being forcefully thrashed, who have no other way except to walk to whatever destination out of Palestine Gaza. In fact, where human thinks using mind and conscience, such changes happen, or else if blind mind is used, no such damages can be thought of. It's also in fact that during wars, lives, lives transpire from both ends, which fact in this case is also working. No one can, or no one can on earth can say that this is a war. It's only criminal, severe genocide which must be stopped at once. But who has got such courage to oppose USA and Israel? Mark of exclamation. Only Israel, USA, and respective allied nations support such killings of civilians. To be really frank, state of Palestine has been extremely horrific and can be given no other word except devil's work. Israel and USA have worked like devils. People of world must be human first
and must consider that Palestine people too are human. Israel has designated these people inhuman or so called human animals, which statement must be condemned by all people of world. One one day Israel and USA would certainly state that people in world other than USA allies and Israel are human animals. It means I put one day Israel and USA would certainly state that all people in the world other than USA, its allies and Israel are human animals. Unfortunately, against humanity, whole world has been watching this scenario silently without having any degree of blood boiling. New news claims that Hamas had not planned to attack music festival, Israeli report says. An Israeli newspaper is reporting that an Israeli army helicopter may have fired on partygoers at dance festival attacked by Hamas fighters on October 7th, 2023. More than 360 people were killed at festival in southern Israel. Now again, this news has been encountered by Israel. It is hoped, it is hoped if China is seriously working out certain strategy to reach a stage at which ceasefire could be achieved, for sure would be a welcome step. State this war between State of Israel and people of Palestine must stop at whatever cost, or else it would transform into regional war, if not world war. It would impact whole world economically. Bharat India did not do anything to speak about this war and represents its position on world forum. It has acted as if it does not have any concern about this war. Though in past Bharat India always supported two-state solution related to Palestine, voice of Bharat India has become dead, and in fact our government has become mute, and people have shown in interest in this regard. TV channels and other sources have proved futile and proved that they have no standing in the world. This is just today's note. Trying to read it just briefly for Hindi viewers, because that is also very important for me. It's not only for English I should worry, but worry about all people in this world, and that's why I can say that. Let's say it's of course very important for me. थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिंदी में, अच्छा लगेगा लोगों को. हालांकि मैं गारंटी नहीं देता कि मेरी भाषा बहुत अच्छी होगी. सो देते हैं हम इसराइल पैलेस्टाइन के युद्ध वार या विश्व का 2023 का. इसराइल और पैलेस्टाइन के लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है तेजी से, और कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं कर रहा कि हम इसको किस तरह से रोकें. पूरा विश्व शांत है, चुप है. कुछ कंट्री बोल रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, उसको छोड़ के सब शांत हैं, और मानवता को जैसे तोड़ के फेंक दिया गया हो, धक्का मार के भगा दिया गया हो, और इसको हम कहते हैं सभ्य वर्ल्ड, सभ्यता वाला वर्ल्ड. और कैन से ऐसे बैठे हैं सब दुनिया के लोग जैसे हम कोई मैच देखने आए हैं, कोई कोई प्रोग्राम देखने आए हैं. हमें सिर्फ प्रोग्राम देखना है और कुछ खाना पीना करना, चल देना है. समाचार आते हैं कि कतार और सऊदी अरब कुछ आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से आगे हम काम करें सीज़फायर को, लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन इसके भी कोई भी डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, विवरण उपलब्ध नहीं है. समाचार ये भी आए हैं कि चीन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सारे देशों को, अरब के या इस्लामिक के, बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि आगे इसको हम किस तरह से लड़ाई को हैंडल करें, कैसे उसको रुकवाने की कोशिश करें. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे समाचार आ रहे हैं कि ईरान में ऐसा होगा,
ऐसा नहीं होगा। अच्छी बात है अगर कुछ होता है तो इसराइल लोगों के बीच में, पैलेस्टाइन लोगों के बीच में, और चाइना का कहना है कि कुछ ना कुछ तो आंसर, कुछ ना कुछ हल तो इस बात का निकलना चाहिए कि पहले लड़ाई हो जाए, रुक जाए किसी भी तरह से, और उसके बाद हम बात करें दो राज्यों के, दो संगठनों के सॉल्यूशन की। कैसे हो सकती है बात, ये सोचना है। यूएसए ने ये साबित कर दिया है कि यूएसए ने साबित कर दिया है कि एक बहुत गंदी सोसाइटी है वो, और बहुत गंदा राष्ट्र है वो। इसको सिर्फ अपने देश के सिवाय किसी के ह्यूमन की कोई चिंता नहीं है। यूएसए जो है इजराइल को जबरदस्ती सपोर्ट कर रहा है और उसको उत्साहित कर रहा है कि आप लड़ाई करिए आगे, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन होना ये चाहिए था कि उसको वो फोर्स करता कि आप लड़ाई मत कीजिए, मैं आपके साथ नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फ़लस्तीन के लोगों की परवाह नहीं की। वो कहता है कि ये तो अपनी रक्षा करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। और ऐसा लगता है कि यूएसए जो है उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है इस टाइम, किसी भी तरह से गाजा को इसराइल के थ्रू छीन लिया जाए। और इस हिसाब से पूरे इसराइल को, जो ये वाला इसराइल आज का है और साथ में दो फ़लस्तीन के साथ में कब्जा है, सबको मिला के एक इसराइल बना दिया जाए, यही उसके माइंड में है। और ये भी साबित हो चुका है कि कि यूएसए जो नेशन है उसके राजनेताओं को अपने देश के लोगों की तो ह्यूमन वैल्यूज़ की, राइट्स की चिंता है। उन्होंने इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे अपने देश के लोगों के बारे में तो चिंता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। और ये बात उसकी यूएसए के माथे पे एक काला कलंक है, कलंक कह सकते हैं आप इसको। ये कलंक यूएसए के माथे पे भी है और आगे भी रहेगा। जब भी याद किया जाएगा इस लड़ाई को तो यूएसए का ब्लैक चेहरा सामने होगा, काला चेहरा सामने होगा। इसी प्रकार से यूके ने भी ऐसा ही किया है कि उसने भी साबित कर दिया है कि मानवता की उनके दिल में भी कोई जगह नहीं है अपने लोगों के सिवाय। अपने लोगों की तो इच्छा है उनको कि हम मानवता से रहें, सब इनकी हेल्प करें, राइट्स पूरे मिलें, लेकिन दूसरों के बारे में इनको कोई सोचना नहीं चाहिए, ना सोचते हैं। दूसरे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। और इसीलिए यूके ने अपना विश्वास, अपनी चमक खो दी है। ये कह कर कि हमें ये कहना नहीं चाहिए अब इस बात को लेके, जबकि बच्चे मर रहे हैं, जवान सब मर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कि ये एक सिविलाइज समाज है, सभ्य समाज है, हम नहीं कहेंगे इस बात को। जर्मन का भी वही हाल है, उसका भी वही रोल है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन रोल चल रहा है जर्मन का भी। गलत बात है ये। जर्मन की मीटिंग हुई तुर्की वाले से, तुर्की का एर्दोगन से आपस में बातें हुई, लेकिन जर्मन अपनी चाल चल रहा है। वो कहता है सेल्फ डिफेंस का मामला है, अपनी रक्षा करने का मामला है इसराइल का, इसलिए हमें बोलना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए। और एर्दोगन कहता है कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये ऐसी बात सही नहीं है, क्योंकि सोवरेनिटी खराब कर दिया आपने, उसको स्टेट बनने दीजिए, फिर आप ये बातें करना। लेकिन ये सब एक ही बात समझते हैं कि कोड़े से फेंको माथे पे और हो जाएगा काम। खैर, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ दोनों के बीच में, जर्मन के बीच में या फ़लस्तीन के, जर्मन के बीच में या तुर्की के बीच में कुछ पास नहीं हुआ। लेकिन होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि वो अपनी बात करता है सेल्फ डिफेंस की, जर्मन वाला, और ये तुर्की कहता है फ़लस्तीन बनना चाहिए और ये सीज़ फायर को रोकिए। और सीज़ फायर रोकने की बातें कोई नहीं हो रही, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली बातें बातें होती हैं, कुछ होता आता है नहीं। और ये भी हमने जाना है, जो कि कोई सत्य नहीं है, पक्का नहीं कह सकते, कि तुर्की का प्रेसिडेंट जो है कुछ बात में कर सकते हैं आगे, कैसे इसको कुछ किया जाए, इसमें कोई कंफर्म बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, बातें ऐसी हुज की जा सकती हैं, शायद ऐसा लगता है कि कुछ सोच रहे हैं। इसलिए नई परिभाषा
अपने बचाव की, सेल्फ डिफेंस की इन्वेंट हो चुकी है यूएसए द्वारा, यूके द्वारा, जर्मनी, इसराइल का और बाकी के द्वारा। और ये जो परिभाषा है ये सही तरह से काम नहीं करेगी। हम जानते हैं आने वाले समय में ये नुकसान नहीं देगी सबको, और इसका रिजल्ट वही होगा जैसे अब इसराइल और पब्लिक पैलेस्टाइन की जनता की लड़ाई चल रही है। ये अब समझ आ गया है सबको कि इसराइल एक अपराधी देश है, जिस अपराध को यूएसए, यूके, जर्मन सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी साबित हो चुका है कि जब ये लड़ाई पहुंचेगी, 45 से ऊपर दिन हो चुके हैं अब इस लड़ाई के, और इसको अभी तक सपोर्ट कर रहा है वार को यूएसए, यूके, जर्मनी। और यूएसए ने तो कह दिया है कि इसके बाद भी, लड़ाई के बाद भी, हम हमस को ख़त्म करने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय दल बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय टीम बनेगी गाजा के लिए, और वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी। ऐसी बातें वो कर रहे हैं, जबकि अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। इसराइल ने कहा है कि ऐसा कुछ हम करने नहीं देंगे कि विश्व के लोग आएँ और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करें, ऐसा हम नहीं करने देंगे, जो कि गलत है। एंड उसका कहना है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। और ये भी समाचार है कि कुछ इधर उधर के कंट्राडिक्शन भी होती है, बात कुछ होती है, कहते हैं कुछ है कि 50 छोड़े जा रहे हैं हॉस्टेजेस, जिनको बंदी बना के रखा था पैलेस्टाइन के हमस ने, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई फैसला नहीं है। कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, कंफर्म बात की तरफ से नहीं आती है। कभी इसराइल मना करता है तो कभी जो इस कतार वाला कहता है कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, कभी कोई प्रेस वाला कुछ कह देता है। अभी बात बिल्कुल गोलमोल है। और ये सुना है कि कुछ बातें करने के लिए आगे काम चल रहा है, लेकिन इसकी भी कोई सत्यता, कोई वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। हॉस्पिटलों पे भी अटैक हो रहा है, बड़े दुख की बात है। हॉस्पिटलों पे अटैक हो रहा है और पेशेंट्स को वहाँ से भगाया जा रहा है, ताकत से, शक्ति से, भागिए आप यहाँ से। और इसराइल ने दावा किया है कि वहाँ टनल है हॉस्पिटल में, और उन टनल से ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो कहते हैं रिलायबल सोर्स, लेकिन ऐसा गलत कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वास्तविकता तो यह है कि किसी भी अस्पताल में, जो बड़ा अस्पताल होता है, उसके नीचे बेसमेंट की पोजीशन में एक टनल होती है, जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग को कनेक्ट करती है सर्विस बिल्डिंग से, जहाँ से ज़्यादातर सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विस यार्ड से बिल्डिंग को। जिसमें सर्विसेज मैकेनिकल की भी होती हैं, सर्विसेज बिजली विद्युत की भी होती हैं, और रही सही सर्विस भी बाकी होती होंगी, ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी होती है। और ये बात भी सही है, लेकिन ये कहना कि टनल सिर्फ उनके हमस के लिए है, गलत है। ऐसा नहीं है, टनल सब जगह होती है। और वो कहते हैं सिर्फ 50 मीटर टनल, आप सोच लीजिए 50 मीटर में कोई क्या लड़ाई करेगा। आप खुद सोच सकते हैं, 50 मीटर को बहुत बड़ी नहीं है। ये हर अस्पताल में ऐसी टनल होती है सर्विस यार्ड से कनेक्ट करने के लिए, जहाँ से एयर कंडीशनिंग की सर्विस, बिजली की सर्विस, मैकेनिकल की सर्विस वगैरह 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 जाती है। और बहुत से ज्यूज़ हैं यूएसए में, वो अब अपना सोच बदल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं बच्चों को मारना, इसराइल के द्वारा औरतों को मारना, ये बात सही नहीं है, और ऐसा ज्यूज़ कम्युनिटी कभी नहीं चाहती। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसराइल गलत है और उनकी सोच बदल रही है। और वो कहते हैं कि ये गलत है, ठीक नहीं है फ़लस्तीन को इस तरह से मारना। और वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि आदमी क्या सोचेगा, इंसान, मानव क्या सोचेगा, माइंड में और कॉन्शियस में ऐसे चेंज होना ही सोचेगा। जब लोगों को मारा जाएगा, बच्चों को मारा जाएगा, तो उनकी एक मेंटल कैपेसिटी में फ़र्क पड़ता है कि देखिए ये कैसे लोग हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, हम इनकी बात क्यों माने। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आप जिसको जो देना है उसको मिलना चाहिए न्याय के हिसाब से। अगर फ़लस्तीन को मिलता है तो फ़लस्तीन को मिलना चाहिए उनका देश। और वार चल रही है, वार बहुत बहुत तेज़ी चल रही है, और इस बीच में बहुत सारे झूठ भी सामने आ रहे हैं हर तरफ से, जो कि वर्क कर रहे हैं, साथ साथ चलेंगे, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ज़मीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं कह सकता इस बात के बारे में कि जो अपराधी हैं, जो जेनोसाइड करते हैं, पब्लिक को मारते हैं, जिसको रोका जाना चाहिए अब। लेकिन किसके अंदर ताकत है इसको बोलने की, किसको रोका जाए, कौन मुखालफत करेगा, कौन विरुद्ध जाएगा। यूएसए के विरुद्ध जाएगा और इसराइल के विरुद्ध जाएगा। इसराइल, यूएसए इन रिस्पेक्ट टू 10 नेशंस, और बाकी जो भी देश हैं, इसराइल के, यूएसए के, इसराइल यूएसए के, और रिस्पेक्टिव उनके उनके दोस्त अलायंस में जो हैं, वो सब इसके रिश्तेदार हैं।
और उनकी जितना भी मार जाते हैं वो लोग उनकी जिम्मेदारी पे है। वास्तव में बिल्कुल साफ साफ पूछें, बिल्कुल छुपाने के सिवाय, कि आज जो हालत है पैलेस्टाइन की, ऐसी हालत बहुत डरावनी, बहुत अत्यधिक डरावनी, डर से भरी, अंधेरे से भरी, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शैतान का काम, डेविल्स वर्क। शैतान चल रहा है उनके माइंड में और वो शैतान उनसे काम कर रहा है। इसराइल और यूएस से डेविल्स की तरह काम कर रहे हैं, कोई माने या ना माने इस बात को। दोनों जॉइंट वेंचर हैं डेविल्स के। और दुनिया के लोग, विश्व के लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, इंसानियत पहले होती है और उसके बाद देश होता है। फ़लस्तीन के लोग भी उतने ही मानव हैं जितने हम हैं, जितने यूएसए वाले हैं या जितने लोग इस विश्व में रहते हैं, वो सब जितने वैल्यू रखते हैं उतने ही इसराइल के लोग वैल्यू रखते हैं। और अगर ये कोई कहे कि ये लोग जानवर हैं, फ़लस्तीन वाले जानवर आदमी हैं, जानवर मानव हैं, तो ऐसी बातों को निंदा करनी चाहिए पूरे विश्व को। एक दिन आएगा, इसराइल यूएसए कहेंगे कि पूरी दुनिया के लोग, और इसके एलाइज कहेंगे, इसका इजराइल कहेगा कि पूरी दुनिया के लोग पशुवत मानव हैं। मानव हैं ये पशु के रूप में, मानव है ये पशु के रूप में, ऐसा कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया अभाग्यवंश देख रही है इस सीन को चुपचाप, किसी भी ब्लड बॉइलिंग के डर से कोई डर नहीं रहा। और जब ये डर रहे लोग, ब्लड बल रहा है, ब्लड चल रहा है लोगों का, फ़लस्तीनियों का, मर रहे हैं लोग, क्या किया जाए। और ये कहते हैं कि हमस ने ये लाइफ प्लान नहीं की थी उनको मारने के लिए। ऐसी न्यूज़ तो आई है, पहले भी मैंने बताया। और एक इजराइल न्यूज़पेपर का तो कहना है कि हेलीकॉप्टर जो आर्मी का था उसने गलती से इस पर अटैक कर दिया, जो लोग मरे वहाँ नोवा के। और ये इसमें पैलेस्टाइन की आर्मी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन 360 लोग उस दिन मारे गए थे, ये भी सच है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या लेना था, हमस करता तो क्यों करता। और जो बाकी भी खबर भी दिए गए न्यूज़ वो एनकाउंटर की गई। आशा करते हैं कि चीन अपना काम अच्छी सीरियसली करेगा, गंभीरता से करेगा, और कोशिश करेगा कि इन सब देशों को जो जिनका इफेक्ट पड़ रहा है इस फ़लस्तीन के, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, अरब वर्ल्ड को, किसी तरह से आप बात को आगे बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि लड़ाई को रोका जाए। और लड़ाई रोकने के साथ साथ फ़लस्तीन को अपना स्टेट राज्य मिले, अपने हक मिले, ऐसी आशा रखते हैं। नहीं तो क्या होगा कि बहुत फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर लड़ाई बढ़ जाती है, आगे जाती है, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, अर्थशास्त्र के लिए भी और बाकी शास्त्रों के लिए भी। और हमारा देश भारत, इंडिया, ये कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता, गूंगा हो गया है। ये कुछ किसी की बात नहीं कर रहा, ना भारत को विदेश में कोई पूछ रहा है इस विषय के बारे में, ना भारत कुछ कर रहा है, ना ही ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए। ऐसा लगता है कि भारत की सरकार सोचती है, भारत के लोग सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है, हमारे देश में थोड़ी हो रहा है। उन्हें कोई चिंता नहीं है इस बात से, उन्हें कुछ लेना देना नहीं कि दो स्टेट सोल्यूशन बनते कि नहीं बनते हैं, स्टेट बनते कि नहीं बनते, उन्हें कोई लेना नहीं है। खैर, ऐसे कह सकते हैं कि आप, भारत की आवाज़ मर चुकी है, भारत की आवाज़ मर चुकी है। और सच्चाई ये है कि हमारी सरकार बिल्कुल गूंगी हो गई है। और उसी तरह से यहाँ के लोग कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसमें। इसी प्रोग्राम में, टीवी चैनल्स में एंड अदर सोर्सेस हैव प्रूव्ड ट्रू एंड प्रूव्ड दैट दे हैव नो स्टैंडिंग। दे हैव प्रूव्ड, हमारे लोगों ने साबित कर दिया है कि वो फ्यूज फ्रेजाइल हैं, ऐसे हैं जो सिकुड़ तो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं हम। हमारे हमारे देश के लोगों को चिंता कोई नहीं है, पैलेस्टाइन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, चुनाव में व्यस्त सब, और टीवी चैनल के तो पूछो मत। और दूसरे भी जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि फेलियर हुआ है कहीं पॉइंट से, एंड दैट ये बात
दुनिया में खड़ी सहने वाली नहीं है कि भारत ऐसा देश रहा है। ये जो मैंने आज की आपको तस्वीर दिखाई, समझाई, बोली, मैंने पढ़ के बोली है, इसको मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन शेयर करने की। अगले थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा, I will try to take it to screen share through Zoom recording, and then Zoom recording I shall publish on Facebook and YouTube, because there is some problem between me and Facebook. Facebook has restricted my account and I cannot put live videos onto you, which is my program for every day. So that I understand that people do not want to read, they don't want to study, but they just want to get some feedback and allow people to do it. इम्पोर्टेंट बात तो बहुत है, क्या करें? लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। It's very, very important. First time in my life I've seen that such war which cannot be defined, war which cannot be named war. WHO is suffering, they are crying, and UNO is crying. UNO has become like, no one listens to it. What sort of UNO it is, I don't understand. A body of world having charter of all countries, UN charter says, but this has just remained like a book. You know, there is no strength in this. There is no value in this, because those who was responsible for this war, they have veto power. The USA has veto power. UK has veto power. Russia has veto power. China has veto power. France has veto power. So two countries, at least USA and UK, they are playing with veto power. They don't want ceasefire. They don't want peace, and it is shameful onto America and UK that they want the war to go on. Means they are killers. I can say indirectly they are involved in killing of citizens, killing of breaking of country, and destruction of land, destruction of buildings, and destruction of everything. It's not acceptable at all. Whatever Arab world is just that's Arab's headache, but I am also finding at this moment there's not a single country which can support this cause of Palestine freedom. Why? I don't know reason. World has changed. In fact, it's not same world as it was before. Every country thinks of its interest, not of others' interests. And even if you when go on agreements, you just say first of all, what sort of work is what will take and what will give. And that we are unable to do now. ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये वार ऐसी है कि इसमें बिना बोले रह भी नहीं जा सकता। Being a countryman, being country representative of India, I can say that क्या कहें बताइए। कई बार बहुत दुख होता है, मैं सोचता रहता हूँ, कीप ऑन थिंकिंग। दो आई एम नॉट डायरेक्टली हिट बाय दिस वार, आई एम नॉट डायरेक्टली हिट, बट आई एम मेंबर ऑफ वर्ल्ड. I'm a member of this country, and I worked with these people. Many of them, not exactly this in Israel. I worked in Doha, Qatar. I worked in UAE with many nationalities, including Lebanon, including Palestine, and other countries as well. So I know people. What's the nature of those people? They are aggressive, of course. They are hardworking. They are smart working. They want to complete job as soon as possible, and they want more and more job. So this is very important point for Palestine citizens, which I think is not taken care of very well. I just thinking of appreciating Israel doesn't mean anything. I do not appreciate anybody, and I don't also want to depreciate anybody. Why appreciate? Why appreciate? There's no meaning at all. क्या मिलेगा उससे? मैं कहूँगा आप गलत हैं, आप सही हैं. हमें तो ये देखना है कि वॉर से रिजल्ट क्या निकलने वाला है. What result this war will give. That's the important point. If you analyze everything, you'll find that this is just not nothing new in this. It's very old issue. Issue before, I think this issue started when our country got independence in 1947, and we are in same neighboring year. You can say 1948 or so elsewhere. There was some, you can say, deposition of Israel. Israel was projected in those days. There was no Israel before that. Even during time formation of Israel, its name was given a Jewish nation, which was later deleted, and now permanent name is Israel. While name of Palestine already existed there, but Palestine was ignored. It's innocent people were, I think they may not be educated at that time, or they were hard-working class, against the workers level. So they were not given any value. What land is land? You may be worker, you may not be worker.
Land is land, it's their land, they have to take it back, and that's what they are doing. Now, in those days, these are very old people, just like we had in our forefathers in 1948. But yet, these people might have, these young soldiers now, and these adolescent people around, or middle-aged people, they might be young or babies at the time, when now they have grown up and they're educated. I think generally all your generation of Palestine is educated. As far as interviewers saw, I mean, they speak very good English, they analyze, they think, they work hard, and they talk good. This is also very important point. And if I see opposite to that, people are very, very, very aggressive. They can't speak good, they can't tolerate anything. They want to say, as if oh no, don't speak, don't tell me I'm liar, like that. If I say you're a liar, oh no, who are you to say this and this and that? I am in this my land, everything. They are terrorists and this. No, no, no. I think these people are nervous and they are in panic. They are plotting. They know that something wrong is going to happen with them. That's why they have lost mental balance, mental equilibrium, and it's not good for them also, because if you want, okay, you are good, I say, why don't you give land to them? It's not your land, but you want to do that. अरे आप उनकी जमीन दे दीजिए ना भाई, क्यों नहीं देते आप जमीन? आप रख के क्यों बैठे हैं? ये जमीन उनकी, देश उनका, आप कौन होते हैं कहने वाले? लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा हमारे साथ हुआ था। देश हमारा, जमीन हमारी, सरकार किसकी? ब्रिटिश की। गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिश। राजा कौन? ब्रिटिश। हमारे साथ भी तो यही हुआ। तो this happened with us, this happens in everyone. And those who are occupier, who are invaders, they always conduct the way Israel has been conducted. And it's getting support from US. So other, there's reason for that, logistic support, and they want to use Israel, and they want to use technology, or they want to conduct experiments, or you can say whatever, whether they are trials in that land. And that's why they do not want people like Palestine who work there or stay there. They don't want to. They want to keep secrets with them. And they want Palestine people should stay there at all, because maybe they conduct tests, nuclear tests, or elsewhere. It shall happen if this Israel is expanded, including land of remaining Palestine. And if it happens, means Palestine shall not exist on world map. It shall diminish. It shall almost play place in this world, and but it should not happen that way. If in 2023, when whole world is called one, we say we are all in family, internet speed is there, and we can say news transfer can be done in a couple of minutes and seconds. And what's happening in USA, we know here. What's happening in Canada or elsewhere in the world, in just in a couple of seconds by internet. So we cannot say that it's so easy to capture lands of other, arrest lands of others. Can say, oh, Palestine shall give its land to Israel, and Israel shall run away, or force these people to go away. Ethnic cleansing we call it, but it can be. But I think as much support we provide to, as many countries provide support to these people of Israel, it shall be better. Otherwise, it shall be painful. It's painful in that case, means we have to be very serious about this case. I will not pull on leader as much as possible, because I will only say that free Palestine is very important to carry. The phrase is free Palestine is a good phrase one, and also other phrase or slogan is that from river to sea, Palestine be free. Well, these are all public slogans. We cannot say anything about that. My question is, this subject, this topic, this issue, this problem must hold forever, must hold forever. And only solution is that, first of all, we have to stop this war, we have to hold this war, and then we have to say, okay, now we sit together and decide that whatever right is due for Palestinian people, that right should go to him. I'm sorry, go to Palestine, and whatever rights should go to Israel, those Israel must enjoy. And there should be two nations, two countries, there's two governments, two sovereignties. Israel is sovereign, democratic, as well as there should be Palestine, which should be, you can say, sovereign, democratic. They may follow whatever values of religion, don't care, but they should understand that, means if long tunnel exists, how what happens if short tunnel is also, that's also important point. Tunnel is tunnel, and it's a structure, it's an engineering structure. You can say, if you can say, if Israel, well, I think Israel lies only, and that's true, means I should not say that's a question of country. But news suggests that Israel is not, it's all fabricated news Israel is disseminating. It is not far, we can say, reliable news for time, because we don't know.
Today we just broadcast something. After 2 or 3 people shall forget it happens. People forget that advantage of which Israel is taking, should not take, and it's a very important point. It just means it does for जितना भी कर रहा है इसराइल ठीक नहीं कर रहा है. बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, छोटे छोटे बच्चों का टांग टूट जाए, किसी की कुछ हो जाए, किसी का कुछ भी खराब हो सकता है. और छोटे कैसे लपेट के ले जा रहे हैं, आप देखिए उसको अस्पताल में जा रहे हैं, अस्पताल वाला खुद परेशान है, बैठने की जगह नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, कुछ नहीं है. तो जो हेल्थ चाहिए वो भी तो वापस चाहिए ना. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. It's very, very dangerous what's happening, and we have to be careful in this case. Otherwise, it may not be made good. We have to understand this point, and with this, I want to go further on this. I'll just today I'll keep it limited to 40 minutes because I don't have much information. I have to check news also, what news will be in. Only then I would say that okay, fine, thank you very much. I need this, and I think it will be fine.